वेलकम टू AGPG स्टडी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के B.sc एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर की प्रैक्टिकल फाइल फंडामेंटल्स ऑफ सॉयल साइंस 4 and 5, but I have already shared experiment first, second and third in the previous video, so you can check them in the playlist. Now let's start. Objective: estimation of organic matter content of soil. Principle: इसमें जो भी डिटर्मिनेशन ऑफ सॉयल ऑर्गेनिक कार्बन भी बेस्ड रहता है वॉल के ब्लैक क्रोनिक एक मेथड होता है वॉल के ब्लैक मेथड। इसमें क्रोनिक एसिड वेट ऑक्सीडाइज मेथड। इसमें सॉयल में जो भी ऑक्सीडाइजेबल मैटर होता है उसको ऑक्सीडाइज किया जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये फॉर्मूला है इसका K2Cr2O7 सॉल्यूशन। देन द रिएक्शन इज असिस्टेड बाय हीटिंग जनरेटेड। जो भी रिएक्शन होता है इन दो वॉल्यूम को हीट करने के बाद the volume of sulfuric acid H2SO4 are mixed with 1 volume of dichromate. The remaining dichromate is treated with ferrous sulfate and is inversely related to the amount of carbon present in the soil sample. Now apparatus. Apparatus क्या लगेंगे? Hot plate with separate control on electric next as used in macro nitrogen determination or Bunsen burner with tripod and gaze. और ये कुछ apparatus लगेंगे. Next, caution. If using an ordinary pipette, use a rubber pipette filler to suck up the potassium dichromate solution which is poisonous. ये कुछ apparatus हैं. Conical flask, volumetric flask, 1000 ml, 100 ml. Reagents: potassium dichromate. Dissolve 49.040 gram potassium dichromate dried at 105 degrees Celsius in deionized water, then transfer to a 1 liter volumetric flask and make to volume with deionized water. Sulfuric acid 98%, इस टाइप से इसको यूज़ करना है. 0.4 and ferrous sulfate, then ferroid, then procedure. Determine the moisture content of the air dry soil which has been grouped to pass 0.42 mm sieve. Weigh accurately enough soil to contain between 10 mg and 20 mg of carbon into a dry floored 250 ml conical flask. ये पूरा प्रोसेस है कैसे इसको करना है. Calculations from the equation. The formula of organic carbon percent is equal to 0.03 gram multiply n, where n is normality of potassium dichromate solution, multiply 10 ml, multiply 1 minus T by S. T means volume of FeSO4 used in sample titration. S is volume of FeSO4 used in black titration. ODW, oven dry sample weight. Experiment 5. Objective: determination of soil density, moisture content and porosity. Soil, water and air occupy voids in the soil called pore space. Pore system in soil provides the conduits for air and water exchange. पोर सिस्टम जो होता है सॉइल में वो प्रोवाइड करता है एक अच्छा एक्सचेंज सिस्टम एंड रूट्स और माइक्रोब्स के लिए एक प्रॉपर हाउस प्रोवाइड करता है जिससे कि प्रॉपर रूट्स और माइक्रोब्स का डेवलपमेंट हो और प्रॉपर एयर और वाटर का एक्सचेंज हो. सॉइल पोरोसिटी इज द अमाउंट ऑफ प्योर वॉल्यूम
Then a medium textured, well aggregated soil contains about 50% pore space. मीन्स जो एक मीडियम टेक्सचर और वेल एग्रीगेटेड सॉयल होती है उसमें 50% पोर स्पेस होता है, जो कि एक अच्छी कंडीशन होती है प्लांट ग्रोथ के लिए. व्हेन द पोर्स होल्ड एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, पोर साइज अफेक्ट्स पोर एक्टिविटी. पोर एक्टिविटी को अफेक्ट करता है. बिग पोर्स मैक्रोस्पोर्स फैसिलिटेट फ्री वाटर ड्रेनेज, एरिएशन, evaporation and gas exchange. Mesospore, medium-sized pores are essential to capillary sites. Macrospores are most prevalent in sandy soils and well-aggregated soils. लेकिन ये converted होते हैं microspores by compaction. Medium texture soil have an abundance of mesospores. Free water drainage होता है, proper aeration होता है, evaporation होता है, एंड गैस एक्सचेंज. जो मीजोस्पोर्स होता है उसमें मीडियम साइज स्पोर्स रहते हैं जो कि कैपिलरी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़रूरी होता है, एंड माइक्रोस्पोर्स प्रोवाइड करते हैं वाटर स्टोरेज साइट्स. मैक्रोस्पोर्स जो होते हैं वो सैंडी सॉइल में के लिए प्रिवलेंट होते हैं एंड वेल एग्रीगेटेड सॉइल्स, बट कैन बी कन्वर्टेड टू माइक्रोस्पोर्स बाय compaction. Medium texture soils have an abundance of mesospores. Clays promote aggregation but can also be readily compacted. Clays also increase water storage by providing an abundance of microspores. ये सॉइल होती है वो प्रमोट करती है एग्रीगेशन को, बट ऑल्सो कॉम्पैक्टेड हो जाती है जिससे कि प्रॉपर वाटर स्टोरेज इंक्रीज होता है. जैसे कि वाटर स्टोरेज इंक्रीज होता है प्रोवाइडिंग एन abundance ऑफ माइक्रोस्पोर. Thus texture and structure plus the level of induced compaction are the main properties governing amount and type of pore space in the soil. Organic matter affects porosity through its enhancement of soil aggregation. पोरोसिटी हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी पता हो. बल्क डेंसिटी एक सॉइल मास होता है जो कि डिवाइड होता है यूनिट वॉल्यूम से. इन इट्स नेचुरल स्टेट अ में सॉइल वॉल्यूम्स इंक्लूड सॉलिड्स एंड पोर. इसीलिए सैंपल जो हम कलेक्ट करते हैं वो विदाउट कॉम्पैक्शन और क्रम्बलिंग होना चाहिए जिससे कि करेक्टली हम डिटरमाइन कर सकें बल्क डेंसिटी को. द फॉर्मूला इज दिस. एंड पार्टिकल डेंसिटी represent the average density of all the minerals composing the soil. पार्टिकल सॉइल में जितने भी मिनरल से कंपोज है सॉइल उसकी एवरेज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है. फॉर मोस्ट सॉइल्स दिस वैल्यू इज वेरी नियर 2.65 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब because quartz has a density of this and quartz is usually the dominant mineral. Particle density varies little between minerals and has little practical significance except in the calculation of pores. पोरोसिटी एक सॉल्यूम वॉल्यूम का पोस्चर होता है जो कि क्या ऑक्यूपाइड करता है पोर स्पेस ऑक्यूपाइड करता है. दिस प्रॉपर्टी does not have to measure directly since it can be calculated using value determined for bulk density and particle density. bulk density और particle 100 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड कैलकुलेट द परसेंट सॉलिड. subtracting it from 100 gives the percentage of soil volume that is pore space. Total porosity can be found. This is the formula of
to identify the porosity. Laboratory analysis. Density water content at the measurement maximum water holding capacity filled capacity. फर्स्ट पॉइंट इज जो सॉयल सैंपल है वो बॉक्स से निकालेंगे, क्लीन सिलेंडर फ्रॉम आउटसाइड एंड वेट द सैंपल. सेकेंड पॉइंट, उस सैंपल है उसको कवर करेंगे विद फिल्टर पेपर एंड टाइड विद रबर बैंड. थर्ड पॉइंट इज उस सैंपल को बोल में रखेंगे एंड फुलफिल द बोल विद द वाटर, जिससे कि वो जो सिलेंडर का जो बॉटम है विल बी इन द वाटर, वो वाटर में रहे. फोर्थ पॉइंट इज कवर द सिलेंडर विद प्लास्टिक एंड लीव फॉर 24 hours. फिफ्थ पॉइंट इज टेक फुल फिल्ड सैंपल्स ऑफ फ्रॉम बोल, set for a 10 minute on the moist filter paper, wait the sample. सिक्स पॉइंट, जो सैंपल है उसको सैंड बॉक्स में रखेंगे, लीव देयर फॉर 2 weeks. 7, टेक सैंपल्स फ्रॉम सैंड बॉक्स एंड वेट. पार्टिकल डेंसिटी, इसके भी 4 स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप, 10 मिलीलीटर वाटर फिल करेंगे, डिस्टिल वाटर, वेट द फ्लास्क विद वाटर. ऐसे सेकेंड पॉइंट, थर्ड एंड फोर्थ. देन calculations of water content of the field. ये फॉर्मूला है water holding capacity, then water content at the field capacity, and then aeration porosity at the field capacity. Thank you for watching my video. I hope आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा. Please like, share and subscribe to my channel.